Hello, children. A very important topic of economics that we have to face daily in our life. ठीक है, दिस इज अ थिंग जिसको हम किसी सूरत भी अपनी लाइफ में इग्नोर नहीं कर सकते. इट इज डिमांड. डिमांड व्हाट वी वांट. ठीक है ना, डिमांड क्या होता है? जो हमें चाहिए. बट इन इकोनॉमिक्स एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट है डिमांड में. डिमांड इज नॉट दैट मच इजी इन इकोनॉमिक्स. डिमांड की दो टर्म्स हैं इन इकोनॉमिक्स विच आर सेड टू बी, यू कैन से, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन द definition of demand, which is willingness and ability. If it is that these two terms are missing, then the demand is not complete. Willingness means what you want, and ability means that you are also able to get it. We are willing to have many things in your life. जिस तरह आपका दिल करता होगा कि जी आपके पास भी एक MG हो या आपके पास भी किया स्पोर्टेज होनी चाहिए. ठीक है, हम सबका दिल करता है हमारे पास ये होनी चाहिए. दिस इज आवर विलिंगनेस. बट वी आर नॉट एवरीवन एबल टू गेट इट. हम इस स्टेज पे, इफ यू आर इन अ स्टूडेंट लाइफ, यू आर नॉट एबल टू गेट योर ओन बिग कार. So, for the demand to be completed in economics, willingness and ability, these are the two things. Many times it happens that you are able to get that thing. ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा resources हैं, you are able to get that thing, but you are not willing. Why? बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ दैट थिंग. हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, मुझे और बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो यू आर एबल टू गेट अ न्यू इकोनॉमिक्स बुक, बट यू आर नॉट विलिंग बिकॉज यू ऑलरेडी हैव इट. सो willingness and ability both complete this definition of the demand. Now, what is the law behind which this demand is all moving? The law of demand is that when the price is going to increase, the quantity demanded is going to fall. Why? क्यों? Price is increasing, demand is falling. Because as a consumer, when you have to pay something more for it, योर विलिंगनेस रिड्यूसेस. कि चलो यार वेट कर लेते, हो सकता है सेल लग जाए तो सेल पे ले लेंगे, या कुछ ऐसी पोजीशन हो जाती है दैट एज द प्राइस इंक्रीजेस आर विलिंगनेस रिड्यूसेस. एंड व्हेन द प्राइस रिड्यूसेस योर डिमांड इंक्रीजेस. यू वुड हैव सीन हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा सेल्स लगती हैं. ठीक है ना, हर इवेंट के ऊपर, कोई ईद आ रही है, कोई बसंत आ रही है, हर इवेंट के ऊपर कहीं ना कहीं सेल लग जाती है. वॉट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? बिकॉज द प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल to sell the product before that time, so they reduce the prices. और जब prices reduce हो जाती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है उस चीज़ की ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. आपने देखा होगा सेल्स पे किस कदर रश होता है. वेयर यू हैव टू बाय वन प्रोडक्ट, सेल दे के आप दो दो चीज़ें ले आते हो. वाई? बिकॉज यू आर विलिंग टू बाय as well as your ability to buy increases because the prices have reduced to 30%, 40% or like that. So it is that this diagram is going to explain this law of demand very clearly. Supposedly that the price initially was at this point P and the quantity demanded was at this point Q. The price increased to P1, the quantity demanded reduced to Q1. The price reduced to P2, the quantity demanded increased to Q2. So you can see that there is a contraction and extension in the demand with the changes in the prices.
as the demand is going to increase, it is termed as an extension, and as the demand is going to reduce, it is termed as a contraction in the demand curve. And in this way, the law of demand is continuously keeping on changing. Another thing I would like to tell you children over here, यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत important है, if the demand is only be changing because of prices, अगर demand सिर्फ prices की वजह से change हो रही है, तो it is a movement along the demand curve. आपने देखा demand curve कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा. It is still at its place and it is said to be a movement along the demand curve when the changes are in the price of the product itself. ठीक है, आपने ये माइंड में रखना है. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, किसी और प्रोडक्ट की प्राइस नहीं, उस ही प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज नोन एज द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. बट डेफिनेटली देर आर ऑल्सो मैनी अदर फैक्टर्स. खाली एक प्राइस ही तो नहीं होता ना, देर आर मैनी अदर फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग योर डिमांड एज वेल. When we come to those factors, it would definitely be the prices of the substitutes. ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट्स की सब्सटीट्यूट्स के प्राइसेस जो हैं, that is going to reduce. People are going to switch to the substitute. तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि people would buy the substitute. So if you have to increase your demand, you have to reduce your price lower than the substitute, keeping in mind the profit. Profit को हमने mind में रखना है, ठीक है? Then another factor that can change your demand is a very common in our economy, which is fashion. जैसे ही फैशन एंड ट्रेंड्स चेंज होते हैं, लोग भागते हैं, ठीक है ना. वाई डू पीपल रश टू वेयर अ शर्ट ऑफ यूनिवर्थ या ईडन रोब? इनकी शर्ट्स पे हम क्यों जाते हैं? बिकॉज दे आर ट्रेंडी, फैशन है, ठीक है. सो एज देयर इज अ चेंज इन फैशन, द डिमांड ऑफ द थिंग ऑल्सो चेंजेस. Another factor affecting your demand would be weather. ठीक है, आपकी जो वेदर कंडीशंस हैं, उनकी वजह से भी आपकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट आ जाता है. ठीक है, आप सर्दियाँ होती हैं, हम क्या करते हैं, स्वेटर जैकेट सब लेने लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि उस वक्त की डिमांड है. एंड एज द समर्स कम, वी लाइक टू वेयर लाइट कलर्ड लाइट ड्रेसेस बिकॉज इट इज़ द डिमांड ऑफ दैट टाइम. So weather conditions also affect your demand. Another important factor that is going to affect your demand in nowadays economy is speculation. जी बच्चे, speculation. Speculation क्या होता है? कुछ आइडिया है माइंड में कि speculation क्या है? Speculation is what we think of the future. हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में, प्राइसेस ऑफ द फ्यूल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, ठीक है. अभी अगर कोई र्यूमर आ जाए कि जी कल फ्यूल की प्राइस जो है आज 233 है, कल वो 250 होने वाली है, एवरीवन वुड रश विदाउट थिंकिंग कि ऐसा एक्चुअली है भी या नहीं. पेट्रोल पंप्स के ऊपर लाइंस लग जाएंगी लंबी लंबी, और उसके बाद जो है हर कोई फ्यूल टैंक अपना फुल करवाने पे लग जाएगा, और शाम तक गवर्नमेंट की एक न्यूज़ आ जाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इट वाज जस्ट अ र्यूमर, हमने कोई प्राइसेस इंक्रीज नहीं करनी. दिस इज स्पेक्यूलेशन. ठीक है, कि हम खुद ही अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते कि ऐसा होना है और एक्चुअली वो नहीं होता. Because of this thing as well, there is an increase in the prices of the product. The last but not the least, a very important factor is the population change. अब you know कि हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है ना. डे बाय डे, एवरी सेकेंड्स देर आर मैनी चिल्ड्रेन हु आर बीइंग टेकिंग बर्थ. सो it is that because of this population as well, the demand increases, क्योंकि जितने ज़्यादा बर्थ होंगी बच्चों की, उतने ज़्यादा बच्चों के आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी. when they grow up, उनके कपड़ों की हर चीज़ की डिमांड होगी, उनकी बुक्स की डिमांड होगी, and it is के there would be a demand for all the products increasing.
So it is that with this I would like to end up my lecture. And again at the end, do attempt the exercises that I give you, क्योंकि वो आपके लिए इसका बहुत ज़्यादा beneficial होती हैं, आपका एक concepts revive हो जाते हैं. Okay children, bye bye.